Hi everyone, this is Saumya. Welcome to my channel. Today our topic is media laws and ethics in the pre-independence era in India. Please watch this video till the end, then give your suggestions in the comment box, and if it is useful for you, please subscribe it. When I will post my next video, you will get the message. Let's start now. The first law, Censorship of Press Act 1799. The earliest regulatory measures can be traced back to 1799, when Lord Wellesley promulgated the press regulations. The main motive of this act was to stop the French from publishing anything against the British. This act brought all the newspapers under the government's scrutiny before their publication. According to this law, all content was to be cleared by the secretary to the government, and every issue must contain the name of the printers, the editor, and the proprietor of the newspaper. And there is a notable point, the pre-censorship rule. The pre-censorship rule was imposed in Madras in 1795. Before the Censorship of Press Act of 1799, the pre-censorship rule was also imposed on one of the newspaper in Madras in 1795. After that, we'll discuss about the licensing regulation ordinance in 1823. The licensing regulation ordinance से पहले Lord Hastings relaxed some of these laws in 1818 and removed the pre-censorship of the press. 1818 में Lord Hastings pre-censorship of the press को remove कर दिया था, ठीक है? Now we'll discuss the licensing regulation ordinance. It was brought out by the acting Governor General John Adams in 1823. As for the ordinance, the license was mandatory for starting the newspaper, starting the press, or using the press. License mandatory था at that time. कोई भी प्रेस चालू करने के लिए, यूज करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए लाइसेंस जरूरी था. The restriction was directed mainly at Indian language newspapers or those edited by the Indians. The language newspaper means local language में जो newspaper publish हुआ करता था उस टाइम में, those edited by the Indians, उस न्यूज़पेपर के ऊपर, उस पब्लिकेशन के ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था, ठीक है? The Governor General was given the right to cancel the license. Okay, very strict rule था ये, ठीक है? At that time, to suppress the voice of the language newspaper of India, Britishers ने ये किया था, ठीक है? This caused Raja Ram Mohan Rai, you all know that, the very famous personality of Indian journalism, Raja Ram Mohan Rai, to repeal his Persian journal Miratul Akhbar. It was started in 1822, but due to this law, the licensing regulation ordinance, the Miratul Akhbar, the first Persian journal of India, was repealed. Okay. The next one is the Press Act, or popularly known as the Metcalfe Act of 1835. The Press Act repealed the licensing regulations of 1823. 1823 में जो ऑर्डिनेंस आया था, जो लाइसेंसिंग रेगुलेशन आया था, उसे ये रिपील कर दिया, ये रद्द कर दिया, ठीक है? गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकैफ supported the free press in India. He was imposed that act in India. Okay, he was also to be known as the liberator of the press in India. Okay, this act asked the publishers to give
a declaration about the place and premises of the publication. Okay, जो न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ करता था और पब्लिकेशन जो था वो कहाँ से पब्लिश हो रहा है उसके ऊपर एक डिक्लेरेशन देने के लिए ये कानून बनाया गया था. ठीक है, दिस रिजल्ट ऑफ द लिबरल प्रेस पॉलिसी, ये लिबरल प्रेस पॉलिसी था चार्ल्स मेटकाफ की. ओके, द रिजल्ट ऑफ द लिबरल प्रेस पॉलिसी वाज द रैपिड ग्रोथ ऑफ द न्यूज़पेपर. The next one is the Licensing Act of 1857. Licensing Act of 1857, also known as the Gagging Act. On June 1857, the British government passed the Licensing Act. It introduced the compulsory licensing for owning or running of a printing press. अगर किसी को भी प्रिंटिंग प्रेस चलाना हो तो उसे कंपल्सरी लाइसेंस होना चाहिए. ठीक है, और गवर्नर जनरल कैनिंग आफ्टर द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, you can remember the Shipper Mutiny. At that time, the revolution is also called as the Shipper Mutiny. After that, he imposed the stricter restriction on the press. Okay, government के पास reserve था the right to stop the publication and circulation of any book, any newspaper, any printed matter. कोई भी बुक हो, कोई न्यूज़पेपर हो, कोई प्रिंटेड मटेरियल हो, उसका सर्कुलेशन को बंद करने के लिए, उसका पब्लिकेशन को बंद करने के लिए सारे के सारे राइट जो अधिकार था गवर्नमेंट के पास ही था. ठीक है, समझ रही हो ना? उस टाइम कितना कुछ सहना पड़ता था प्रेस वालों को. न्यूज़पेपर पब्लिकेशन जो करते थे एट दैट टाइम, हैट्स अप टू देम. ओके, then the Press and Registration of Books Act 1867. It is the oldest existing act. The media. This act regulates the printing presses and the newspapers and makes registration with an appointed authority compulsory for all printing presses. For having a press to print books or newspapers, a declaration must be made before the district presidency or subdivisional magistrate giving description of its location. कोई भी न्यूज़पेपर और बुक पब्लिश करने के लिए अगर आपके पास एक प्रेस हो, उसके बारे में वो कौन से लोकेशन में है उसके बारे में आपको एक डिक्लेरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंसी और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास देना पड़ता है. ठीक है, तो एवरी टाइम ए प्रेस इज शिफ्टेड टू ए न्यू प्लेस. अगर प्रेस shifted to another place, a new place, the press declaration is necessary to be submitted. ठीक है, then the Vernacular Press Act 1878. The Vernacular Press Act. The Governor General Lord Lytton imposed the Vernacular Press Act in 1878. Okay, it empowered the government to clamp down on the publication of writings deemed seditious. What is seditious? What is seditious? कोई भी चीज आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लिखते हो तो उसे seditious माना जाता है. The seditious writing, inflammatory writing अगर आप लिखते हो, जो वहां उस टाइम में लिखते थे वो वर्नाकुलर प्रेस के लिए ये सारे के सारे चीज जो नियम था वो लगा हुआ था. फॉर लोकल लैंग्वेज, टू सप्रेस द वॉइस ऑफ द लोकल लैंग्वेज, the government imposed that law. This act attempted to suppress any opposition to the government voice in the local language. Okay, the similar restrictions were not imposed on the English language newspaper. Okay, it was enacted to curb the Indian language press. The press had no right to approach any court of law for the injustice. How sad it was.
ये नियम क्यों किया गया था? ये नियम इसीलिए किया गया था कि इंडियन लैंग्वेज में जो न्यूज़पेपर थे और जो मैगजीन्स और जर्नल्स थे, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन और ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल रखने के लिए ये नियम किया गया था। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज द न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस एक्ट 1908. This act gave the magistrates the power to confiscate press property that published objectionable material, like to cause incitement to murder or acts of violence. Lord Minto promulgated the act which authorized the local authorities to take action against the editor of any newspaper that published matter deemed to constitute an incitement to rebellion. As for the law, as for this act, जो हिंसा करने के लिए और किसी को मर्डर करने के लिए अगर वो राइटिंग्स इंसाइट करता था, वो ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल को जो पब्लिश करने से रद्द करने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। ठीक है, दिस एक्ट वाज ट्रिगर्ड बाय द एक्सट्रीमिस्ट जर्नलिस्ट एक्टिविटी, extremist nationalist activity during and after the स्वदेशी मूवमेंट ऑफ 1906. तो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, उसी टाइम में जो एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट थे उनका जो एक्टिविटीज था उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए, उसी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन डालने के लिए ये न्यूज़पेपर एक्ट 1908 में बनाया गया था। ठीक है, देन द इंडियन न्यूज़पेपर एक्ट 1910. The Indian Newspaper Act was the 1910 was a revision of the Vernacular Press Act. It was also very strict act. It empowered the local government to demand a large amount of security and registration from the printer and publisher. प्रिंटर और पब्लिशर जो न्यूज़पेपर पब्लिश करना चाहते थे, वो उनके लिए तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी था। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन द गवर्नमेंट डिमांडेड अ लार्ज अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी, जैसे अगर उनके पास पैसा नहीं हो तो वो न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं कर सकते थे। ठीक है, द प्रिंटर ऑफ ए न्यूज़पेपर वाज रिक्वायर्ड टू सबमिट 2 कॉपीज ऑफ ईच इशू टू लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट के पास ये 2 न्यूज़पेपर ईच इशू उनको सबमिट करना था। ठीक है, इस नियम के अनुसार जो गवर्नमेंट थे वो कोई भी प्रेस के जो ओनर थे और पब्लिशर थे उनको रजिस्ट्रेशन करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी मनी कम से कम 500 और ज्यादा से ज्यादा 2000 तक देना पड़ता था। उसी टाइम में 500 और 2000 ये बहुत ज्यादा था। ठीक है, अगर कोई भी न्यूज़पेपर ओनर और न्यूज़पेपर में कुछ ऐसे पब्लिकेशन हुआ करता था, तभी अगर एंटी गवर्नमेंट हो, ठीक है, उसे रद्द किया जाता था, उसे डीरजिस्टर कर दिया जाता था। ठीक है, then the Official Secret Act 1923. Before the Official Secret Act 1923, I want to say here the acts of 1908 and the 1910 were repealed on the recommendations of the Press Committee chaired by Sir Tej Bahadur Sapru in 1921. Okay, now we'll discuss the Official Secret Act 1923. This act is aimed at maintaining the security of the state against
the leakage of secret information, sabotage and the like. अगर आपकी जो कंट्री है उसके बारे में कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन आप पब्लिश करते हो और कम्युनिकेट करते हो जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूजफुल टू द एनिमीज, देन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के एक्ट को आप उल्लंघन करते हो. ठीक है. दिस एक्ट प्रोहिबिट्स the unauthorized publication of any communication of any other secret official code or password or any sketch, any plan or model, article, note, document or any information. Okay. This act prohibits the unauthorized publication of all these things. Okay. Next one is the Indian Press Emergency Powers Act 1931. It was enacted which made participation in the movement through print media a punishable offense. Okay, this act was enacted in the wake of the civil disobedience movement. Civil disobedience movement के टाइम में दिस एक्ट को इम्पोज किया गया था. मेड पार्टिसिपेशन इन द मूवमेंट थ्रू प्रिंट मीडिया. अगर प्रिंट मीडिया के माध्यम से कोई मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसे एक पनिशेबल ऑफेंस, दंडनीय अपराध माना जाता था इस एक्ट के तहत. ठीक है. इट गेव पावर्स टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट to suppress the propaganda writings in the support of civil disobedience movement. अगर कोई भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में कुछ अच्छा लिख रहा था उसी टाइम में गवर्नमेंट द पावर्स टू गिव द पावर टू द प्रोविंशियल, जो गवर्नमेंट था, जो प्रादेशिक सरकार था, उसे ये दिया था, जो पावर दिया था उसे सप्रेस करने के लिए उसे पावर दिया था. ठीक है. We discuss so many laws and acts of India before independence. In my next video, I will discuss about the laws of media, the ethics of media after independence. We briefly discuss about the laws imposed before independence in India. I think it will be very helpful for you. Watch again and again and note down the points from the slides. I think it will be helpful for you. Do subscribe and share this video so it may reach to more students. Thank you once again. Bye-bye.